मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर एक वर्कशॉप के लिए सब एकत्रित हुए हैं और ये वर्कशॉप आपकी आईआईसी के अंतर्गत हो रही है, आईआईसी बीसीटीएम के अंतर्गत। जैसा कि लगातार एक सीरीज चल रही है हमारे यहाँ, बहुत से हमने डे सेलिब्रेट किए हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया हमने, इनोवेशन क्रिएटिविटी डे सेलिब्रेट किया। इसी सीरीज में आज एक वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर है और उसके मैनेजमेंट पर है, आईपी मैनेजमेंट फॉर स्टार्टअप, कि किसी भी स्टार्टअप के आईपी को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे कि किसी भी एंटरप्राइज या किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए वहाँ के बिजनेस को बढ़ना बहुत आवश्यक है, वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ना बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्री को बढ़ाएगा कौन? इंजीनियर्स बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनीज बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर उसको बढ़ाएंगे इंडस्ट्री को। लेकिन इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में सर्वाइव होना भी बड़ा कंपल्सरी है। इसके लिए पहले आप कोई एंटरप्राइज ओपन करते हैं, एंटरप्राइज ओपन करने के साथ आप बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस में फिर सर्वाइवल की बात आती है। सर्वाइवल कैसे होगा? सर्वाइवल के लिए आप कुछ नया इनोवेट करें, इन्वेंशन करें, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। मार्केट में अब सर्वाइवल के लिए आपने कुछ नया इनोवेट भी कर लिया। इनोवेट करने के बाद में उसको कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे उसको सेफ रखा जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने इनोवेट किया, किसी दूसरे ने उसको कॉपी कर लिया और उसको कमर्शलाइज करने लगा, तो डेफिनेटली हम डिमोटिवेट होंगे और या फिर हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि दूसरा व्यक्ति कोई इनोवेट करे, उसको कॉपी करे और हम अपना बिजनेस कर लें। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी और हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और इस तरीके से इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वर्क किया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स को, नए इनोवेटर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है वो बताया जाता है, जिससे कि आप अपने इनोवेशन को सुरक्षित रख सके, कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सके, आप उसके जरिए अपने इन्वेंशन को, इनोवेशन को कमर्शलाइज कर सकें और इकोनॉमी में अपना सहयोग दे सकें। तो नए बिजनेस के लिए जितना एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जानना, उनको अप्लाई करना और स्टार्टअप को वो किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, इन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए छोटी सी वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज की गई है और इसके लिए मैं वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले उनको, जिनको यहाँ पर आज अपना व्याख्यान देना है, अपना लेक्चर डिलीवर करना है, वर्कशॉप करानी है, सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करता हूँ और उनको बहुत थैंक यू भी करता हूँ कि वो हमारे कहने पर यहाँ पर आए और उन्होंने इस वर्कशॉप को करने के लिए वो राजी हुए। तो आपके बीच में आज डॉक्टर शाहिदा महमूद अवेलेबल है, जो इस चीज के ऊपर एक अच्छी सी वर्कशॉप आपको कराने वाली है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और शाहिदा मैम से मैं कहूँगा कि मैम प्लीज आप आए और गाइस को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने चीजों को। Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. This is Sharika Mahmood, Assistant Professor from the College of Law. So today's topic, as you all know, workshop on intellectual property rights, IPR and IP management for startups. So here are three words: intellectual property and rights. So what is intellectual here? Intellectual means
intellect, what your mind has created. So the creation of your mind that you have developed is the property that you have your own. So intellectual property rights are likely any other property rights which are intangible in nature. The IP rights usually give the creator an exclusive rights over the use of his or creation for a certain period of time. With the rapid increase in the globalization and opening up of new stars in India, the intellectual capitals have become one of the key value drivers in the present era. There are different country-specific legislations are there for intellectual property rights, international laws and treaties that govern IP rights. So if we see इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर आप कुछ भी अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि आपने कोई नॉवेल का सोचा, नॉवेल की स्टोरी आपने सोची, तो वो आपने अपनी आइडिया आपका था, आपने सोचा, लेकिन आपका आइडिया जो आपके माइंड में चल रहा है वो ये नहीं है कि आप अपने माइंड में ही रखें, उसको आपको एक्सप्रेस भी करना है. हमें क्या पता है इनके माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है. तो यही प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो आपका अपना इंटेलेक्ट अपने माइंड से आप क्रिएट करते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी के ऊपर आपको अपने राइट्स मिलते हैं. तो उसी को ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर हम देखें तो इसके टाइप्स ऑफ आईपीआर का मीनिंग अगर हम देखें तो राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड. क्रिएटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर देयर क्रिएशन for certain period of time. So, if we have created any rights, there are certain types of intellectual property rights like patent, copyright, trademarks, traditional knowledge, GI indication. These are types of intellectual property. अगर आप कोई भी क्रिएशन करते हैं तो उसमें आपको राइट्स जो होते हैं किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं. जैसे कि अगर आपने कोई कॉपीराइट डिजाइन किया किसी भी चीज़ के लिए तो आपको 60 years plus lifetime of that author, you have the time period for copyright. So IP rights protect several aspects of business, but each type of IP rights carries its own advantages. Types of IP are if we see copyright, patent, trademarks, trade secrets, geographical indications, industrial designs, and traditional knowledge. So these are the types of IPR which you have governed. So number one is trademark. If we see the Trademark Act 1999, there is an act which is Trademark Act 1999, which provides for registration of marks, filing multiple applications, the renewable terms of registration of a trademark as a 10 years. So trademark is given for 10 years. Trademark means any words, symbol, logos, slogans, products, packaging और design. अब ये आपका रिमोट है, आपने देखा होगा कई सारे जो हैं अलग अलग HCL है, अलग अलग लैपटॉप है, सब लोग ना उनके अपने अपने लोगोज होते हैं, अपना डिजाइन होता है. तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है जो लोगों ने अपने अपने लिए बना रखी है. सो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. So section 2 clause ZB of the Trademark Act means a mark capable of being presented graphically and which is capable of distinguish the goods and services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colors. The definition of trademark provides under the Trademark Act is wide enough to include non-conventional marks like color marks, sound marks, etc. As per the definition provided under section 2 clause M of Trademark Act, accordingly, any mark used by the startup in the trade or business in any form or distinguish itself from other can qualify as trademark. It is quite significant to note that the Indian judiciary has been given a protective in the protection of trademarks and it has extended the protection under the trademark law to domain names as demonstrated in landmark cases are there. Tata Sons Limited versus Manu Kasori and Yahoo Inc versus Akash Arora. So, point to discuss here, trademark means any mark, logo, design, color, जो सारी चीज़ें होती हैं उसको हम ट्रेडमार्क के अंदर इंक्लूड करते हैं, which is
protected under Trademark Act 1999 and Section 2M of the Trademark Act is defining the trademark. So there are 5 categories in which trademarks are broadly classified. Number is generic mark, number second is descriptive, then suggestive, then arbitrary, and then coined or invented. So generic marks means any using the name of the product for the product like salt. सॉल्ट्स का आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लिखा होता है, टाटा सॉल्ट्स और दूसरे अदर्स हैं. डिस्क्रिप्टिव मार्क्स आर आल्सो देयर. फैक्ट इंक्लूड्स अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट्स, नेम, सिग्नेचर्स, लेटर, न्यूमरल्स, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन, कलर्स और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स राइट्स. So trademarks can be protected as under the statutory laws. Under the Trademark Act, the common law that is under the remedy of passing off. If you have created any trademark and someone is copying your trademark, आपका अगर कोई कॉपी कर लेता है जो आपने डिजाइन किया है, अपने बॉटल का डिजाइन या अपने कुछ, तो उसके लिए आप लोग केस फाइल कर सकते हैं और उसके लिए आपको रेमेडी भी दी गई है जिसमें आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है बाय द कोर्ट. ठीक है. अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ट्रेडमार्क का? यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसेस होते हैं, उसमें आप जाइए, अपने आप को दीजिए कि हमने ये अपना ट्रेडमार्क क्रिएट किया है. तो वहाँ पर ऑफिसेस होते हैं हर कंट्री में, हर सिटीज में अपने अलग अलग, तो वहाँ पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं. ठीक है. सो इफ वी सी अदर आईपी प्रॉपर्टी दैट इज पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मीन्स a monopoly given to the inventor on his invention to commercial use and exploits that invention in the market to the exclusion of other for a certain period as per section 2 clause 1J of Patent Act 1970. Patent Act 1970 is there, in which section 2 clause 1 define the term patent. So patent includes any new and useful art, process, methods or manner of मैन्युफैक्चर, मशीन्स, एपरेटर्स और अदर आर्टिकल्स. पेटेंट आपको किसको मिलेगा? पेटेंट आपको उस चीज़ पे मिलेगा अगर आपने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है तो उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और वो कमर्शियल यूज़ के लिए होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, और नोवेल्टी होनी चाहिए, वो नया होना चाहिए. कोई भी चीज़ ये नहीं है ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है कोई भी चीज़ और आपने उसी पे कह दिया कि हमें भी पेटेंट दे दीजिए, ये हमने बनाया है. नहीं, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा जब तक कि उसमें ऑलरेडी वो नॉवेल नहीं हो, वो यूजफुल ना हो, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होना चाहिए, तो उसी इन्वेंशन पर आपको पेटेंट मिलता है. ठीक है. तो द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्वेंशन इन द पेटेंट एक्ट 1970 इंक्लूड्स द न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल एज न्यू प्रोसेस. देयरफॉर अ पेटेंट कैन बी अप्लाइड फॉर द प्रोडक्ट्स एज वेल एज प्रोसेस which is new involving inventive steps and capable of industrial application can be patented in India. So the invention will not be considered new if it has been disclosed to the public in India or anywhere else in the world by a written or oral description or by use or in any other way before the filing date of the patent application. The information appearing in advertising and technical journals, books, etc. will also be considered a prior knowledge. अगर पहले से ही कोई भी इन्वेंशन प्रायर नॉलेज में है, किसी को पता है कि हाँ ये चीज़ कैसे बन रही है और आप उसी पे जाके कहते हैं कि ये जो रिमोट है ये मैंने बनाया है, लेकिन तो ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं यूज़ करेंगे, डालेंगे, अपना कोई नया इन्वेंशन नहीं होगा और इसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो यू डिडंट गेट एनी पेटेंट ऑन दिस प्रोडक्ट. ठीक है. So it is important to note that any invention which falls into the following category is not patentable. So there are something in which patent are not given. First of all, frivolous things, obvious, contrary to well-established natural laws, contrary to law of morality, injurious to public health, a mere discovery of a scientific principle, the formulation of an abstract theory, a mere discovery of new property or new use or known substance or process, machine or apparatus, a substance obtained by a mere admixture of resulting into the aggregation of the properties of the component, therefore, or a process of producing such substance. So, the application of the grant of patent can be made by either the inventor or by an assignee or legal representative of the inventor.
The term patent is given for 20 years. कोई भी प्रोडक्ट पर आपको पेटेंट लेना है तो वो आपको 20 इयर्स के लिए ही दिया जाता है. 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अगर किसी ने उस इन्वेंशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो यू हैव अ राइट टू रिन्यू करवा सकते हैं आप उसको 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद. ठीक है. उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन. हाउ वी यूज अ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन. व्हाइल यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी or invention, the startup should check and confirm that it does not violate any patent right of the patentee. It is a startup to use any patented invention or technology. The startup is required to obtain a license from the patentee. Enforcement of patent right. How we enforce the patent rights. So it is pertinent to note that the patent infringement proceedings can only be initiated after grant of patent in India, but may include a claim retrospectively from the date of publications of the application for grant of the patent. Infringement of patent consists of the unauthorized making, importing, using, offering for sale or selling any patented inventions within the India. If you have taken any patent and someone is using your product in his name, so there is a case for infringement. ठीक है. तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट कंसिस्ट ऑफ द अनऑथराइज्ड मेकिंग. अगर आपने पेटेंट ले लिया है फिर भी कोई इंसान आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो आपके पास इन्फ्रिंजमेंट का राइट है कि इसने हमारी बगैर परमिशन की हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया है. तो कैसा होता है ये अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं उसका जो उनकी परमिशन नहीं है उसके अगेंस्ट जाकर. So under the Indian Patent Act 1970, only a civil action can be initiated. If someone has taken your patent, so civil action can be taken by the Indian Patent Act 1970 in the court of law. Like trademark. Trademark का भी हमें infringement मिलता था, हमें compensation दिया जाता है. यही रेमेडी है हमारे पेटेंट में कि अगर कोई आपका पेटेंट ले रहा है तो you have a right to file a case in Indian Patent Act 1970 which includes permanent interim injunction, damages or grant in a suit for infringement of patent includes permanent and interim injunction, damages on account of profits, delivery of the infringing goods for destruction and cost of legal proceedings. So next type of property is copyright. We have covered trademark, patent and another one is copyright. What is copyright? Copyright क्या होता है? Copyright means any legal right of an author, artist, originator to commercially exploit his original work which can be expressed in a tangible form and prevent such work from being copied or reproduced without his consent. Copyright Act 1957 is there in which the term work means copyright substance, artistic work. अगर किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई भी अपना स्कल्पचर बनाया है, कोई स्टैचू बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है, तो आपको राइट है कि आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं विच इज डिफाइंड अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957. ठीक है. तो कॉपीराइट एक्ट 1957 द टर्म वर्क इंक्लूड कॉपीराइट सब्जेक्ट्स इंक्लूड एन आर्टिस्टिक वर्क कंपेयरिंग अ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, drawing including a diagram, a map, a chart or a plan, engraving of photographs, work or architecture or artistic craftsmanship, a dramatic work, recitation, choreographic work, literary work, including computer programs, tables, compilation in computer databases, musical work, including music as well as geographical notions, sound recording and cinematographic frames, registration of copyright. So in India, registration of copyright, how does? Registration of copyright is not mandatory as a registration. It is as mere recorder of the fact. The registration does not create or confer any new rights and is not a requisite for initiating actions against infringement. The view has been upheld by the Indian courts in a signature of judgment, despite the fact that registration of copyright is not mandatory in India and is protected through the International Copyright Order 1999. It is admissible to register the copyright as a copyright registration certificate is accepted as a proof of ownership in the courts and by police authorities and acted upon smoothly by them. How enforcement of copyright in India is done? Any person who has the original work of the other person without obtaining license from the owner infringes the copyright of the owner.
The law of copyright in India not only provides for civil remedies in the form of permanent injunction, damages on accounts of profits, delivery of the infringer material for destruction and cost of the legal proceedings, but also make instances of infringement of copyright a cognizable offence which is punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months and which can be exceeded to 3 years. So in patent and trademark there is compensation, damages are given, but in copyright case there is cognizable offence if anyone copies your work. So in copyright there is a punishable offence. It is a punishable offence in which imprisonment for a term of 6 months can be given and which may be extended to 3 years. And also fine which shall not be less than 50,000 or may extend to 2 lakh rupees. Okay. So for the second and subsequent offence, there is a provision for the enhanced fine and punishment under the Copyright Act. The Indian Copyright Act 1957 gives power to the police authorities to register the complaints, first information report, and an act on its own to arrest the accused, search the premises of the accused and seize the infringing material without any interventions of the court. Now the next IP property is industrial designs. As per the definition given under section 2D of the Design Act 2000. So industrial design is given under Design Act 2000 in which section 2D define the industrial design means any of the features of shape, configuration, patterns, ornament applied to any articles by an industrial process or means whether manual, mechanical or chemical separates or combined which in the finished articles appeals to and any judged solely by the eye. However, design does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device and does not include any trademark as defined under Trademark Act or any artistic work enforcement of design right in India. So the Indian Design Act 2000 is there which only provides for civil remedies. Besides injunction, monetary compensation is recoverable by the proprietary of the design either as contract, theft or damages. An action for infringement of design can only be initiated after the registration of the design. However, an action for passing off is maintainable in case of unregistered design. So the next IP property is trade secret. Okay, trade secrets means you know KFC and Coca-Cola, सबको पता है KFC और कोका कोला है, लेकिन इनका ये एक सीक्रेट है कि ये कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. कोका कोला तो किसी को नहीं पता कि उन्होंने कैसे बनाया है, उनका जो मेथड है वो उन्हें ही पता है, तो ये उनका ट्रेड सीक्रेट है. तो ट्रेड सीक्रेट्स की एग्जांपल आपकी KFC एंड कोका कोला है. तो क्या है ये ट्रेड सीक्रेट इज ऑल्सो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये उनको कि उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि हमें ऐसे ऐसे बनाना है, तो ये उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेड सीक्रेट है ये उनका कि वो अपने किसको भी बनाकर दे सकते हैं, लेकिन दे डिडंट डिस्क्लोज कि उनका क्या सीक्रेट है. तो KFC एंड कोका कोला इज अ ट्रेड सीक्रेट. सो ट्रेड सीक्रेट इंक्लूड्स एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन which provides an enterprise a competitive edge over others. Trade secret encompass a manufacturing or industrial secrets and commercial secrets, formula, practice, design, instrument, pattern, commercial methods or compilation of information which is not generally known or reasonably ascertainable by strategies for protection and exploitation of IPR for startups. So next is GI. GI is geographical indications. So geographical indications and traditional knowledge are also there, in which we have discussed that these are the next. So I have discussed the intellectual property rights policies also there. In 2016 there is National Intellectual Property Rights Policies, in which its aim is to create a creative India, innovation India, and it is approved by the Indian Cabinet on 12 May 2016. One of the main objective of the policy is generation of
IPR. Major issues what we have seen in the need of IPR regime. Why we need? So we need copyright plagiarism, piracy and other IPR violations were rampant, causing huge loss of IPR owners. So these startups cannot be afford the complete protections available under the intellectual property regimes. So it is necessitated establishing a robust IPR regime with the targeted strategies and government policies that strongly support holistic development and sustainability of IPRs of individuals. So first step for the startup is to evaluation of the prioritize the IP rights involved in its business. If we see the IP rights, intellectual property rights and IP management for startups. The startup ecosystem is one of the key drivers of innovations in Indian ecosystem for more than 150,000 recognized startups as of December 31st, 2023. Startups owner must understand how to protect and market in intellectual property. So if we see the importance of intellectual property for startups. Some importance of intellectual property for startups. Number one is protecting innovation. Why intellectual property is important for startups? Number one is protecting innovation, which means startups typically rely on their innovation ideas, products or services to differentiate themselves for competitions and attract customers. IP rights such as patent, trademarks and copyright can provide legal protection for these innovations, preventing others from copyright or imitating them without permission. This helps startups maintain their market position and generate revenue from their ideas. Number second is attracting investments. So investors can often more willing to invest in startups that have a strong IP portfolio, as it demonstrates that the company has a competitive advantage and a solid foundation for future growth. So IP rights can also be used as collaborate to secure financing or a bargaining chip in negotiations with potential partners and acquirers. So number one is, third is building brand value. So it is important for the intellectual property rights for the startups to build a brand value. So trademarks and other branding elements are essential for startups to establish their identity in the marketplace and build a brand value. A strong brand can help attract customers, foster loyalty and increase the perceived value of the company. Number fourth is enforcing rights. So if we see, having registered IP rights give startups the ability to take legal actions against infringers. If you have registered your IP, अपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर करवा रखी है तो आपके पास में ये राइट है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है तो जाकर आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं. तो ये आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए. सो इन्फोर्सिंग राइट्स, हैविंग रजिस्टर्ड IP वैल्यू कैन गिव a legal action against infringers whether through cease and desist matters, litigations or other means. This can be particularly important for startups that operate in crowded or competitive markets where IP is common. Intellectual property acts in startups in India, if we see, there are various challenges are also there. So the key challenges are protecting intellectual property assets and avoiding infringement. Startups need to be prepared in advance on which intellectual property assets to protect, how to leverage their intellectual property for expansion and generation for more revenue, and how to mitigate the risk of potential abuse or infringement. So why is intellectual property important for startups? If we see, when launching a business, numerous considerations come into play, spanning into establishment of the branch and targeting markets to fostering financial growth. Yet safeguarding intellectual property IP stands out as a critical aspect amidst market challenges. IP represents a valuable intangible assets for any company, particularly startups, serving to level the competitive landscapes against establishing players and enhancing prospects for lucrative opportunities.
So reasons to secure IP rights for your startup. Number one, numerous startups find it imperative to secure rights to their intellectual property IP to remain competitive. Contrary to common belief, obtaining basic IP protection doesn't demand hefty financial resources or a large legal term. Generally, it involves minimal fees and legal research. So it prevents the unfair exploitation. If we see why we secure the IP rights, because it prevents the unfair exploitation. Formal IP protection achieved through registration, notifications, others that your patent logo software is your property. So it deterring the unfair protecting by other entities. It presumes the ownership. If you have registered your IP value, so you are the owner of your property. So it is important to secure your IP rights. So it presumes your ownership, securing legal rights in copyright, patent and other IP forms establish a reputable presumptions of ownership. In legal disputes, courts tend to favor your ownership unless proven otherwise by the opposing party, granting you an advantage position in infringement cases. And other protection is protection against litigation. अगर आपने आईपी प्रॉपर्टी को जो है पहले ही जाके रजिस्टर करवा दिया है तो फर्दर लिटिगेशन की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है, आप दिखा सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम ही ओनर हैं इसके. ठीक है. सो इट प्रोटेक्ट्स फर्दर अगेंस्ट लिटिगेशन. फाइनली, टू सिक्योर आईपी राइट्स leaves your startups vulnerable to potential infringement claims as you may unknowingly use someone else's property. So proper IP acquisition shields your startup from costly litigation when encountering ownership conflicts later on. Reasons why some businessmen owners prefers not to secure IP rights initially. So the primary difference to formally safeguarding your startup's intellectual property rights is its cost. During the initial stages of business development, startups frequently face financial constraints and resource limitations. Acquiring IP rights necessitates significant investments in money, time and other resources. International IP protection in particular can be financially burdensome and time consuming. So consequently, startups often postpone addressing IP concerns and assuming that they can be addressed them later with a legal team once the company expands. If we see some common IP mistakes for the startup, so startup often makes overlook or neglect their intellectual property strategy, which can have dire consequences for their development. Some common and critical mistakes include underestimate the value of IP. IP को वैल्यू समझते नहीं है तो उसको वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है. Neglecting to create an IP strategy. Second one is just like marketing or financial planning, a solid IP plan is essential. Without it, startups is expensive, lawsuits and jeopardize their assets protection. Number third one, lack of communication between creators and decision makers. So as startups grow, the disconnect between those creating IP and those safeguarding it can lead to vulnerability. It's crucial to ensure constant communication between these terms. And number fourth is non-prioritizing confidentiality. Protecting trade secrets and maintaining confidentiality is vital. Implementing measures like NDAs, access restrictions, and encrypting help prevent breaches. So, if we see what is intellectual property, this is very important and frequently asked question. So, what is intellectual property? Intellectual property encompasses various creative and innovative expressions, including literature, art, inventions, design, symbols, names, images, and computer code. It is safeguarded by intellectual property law, which spans copyright, trademark, and patent regulations, aiming to safeguard the rights of creators. If we see in this slide,
intellectual property rights and startups in India, challenges and opportunities are there. So key challenge is protecting intellectual property assets and avoiding infringement. So a startup needs to be prepared in advance on which intellectual property assets to protect, how to leverage their intellectual property for expansion and generation of more revenue, and how to mitigate the risk of potential abuse or infringement. Number 7 is identifying and entering new markets. A startup need to carry out country-specific clearance searches to determine their availability or freedom to operate in those markets. Moreover, it is important to identify which geographies are first to use and which are the first to file, prioritize the filing requirements. Disclosure of information and trade secret. One of the easiest is often overlooked issues faced by the startup is to prevent the public disclosure of confidential information. So this includes the trade secrets. It is extremely vital to understand how and what information is to be shared internally and externally. So this is your choice, what information you want to share and what information you are not liable to share. So any confidentiality information such as business strategies, customer list, etc. are valuable assets for an early age startups. While there is no statutory protection available to trade secrets in India, startups must be protect themselves and avoid spilling of such confidential information by signing non-disclosure agreement restricting access to sensitive data, training and employees, etc. If we see lack of knowledge are also there, most of the startups are unaware of the importance of intellectual property rights and how to protect their IPR. As a result, there are low level of patent, trademarks and copyright registration. Weak enforcement is also a key challenge. The enforcement of system in India is thought to have a weak framework for IPR safety and its enforcement measures are insufficient. This has led to extreme level of IPR infringement, counterfeiting and piracy, particularly in software, pharmaceuticals and entertainment sectors. बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जो बनाती हैं लोग अपनी दवाई वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो अपने फार्मूला जिस बेसिस पे वो बनाते हैं वो उसको रजिस्टर ही नहीं करवाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को हम जाके रजिस्टर करवा सकते हैं. तो कॉपीराइट का अगर केस है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है कि हम लोग ने ये नॉवल क्रिएट किया है या ये पेंटिंग बनाई है तो आप जाइए वहाँ ऑफिस में जाके अपना आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है. वहाँ पर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उस मैटर को देखते हैं एंड दे विल रिकॉग्नाइज whether there is any objection or not. If it is not objectionable, so within 30 days they will see, and अगर objection है तो they will reject it, and acceptable है तो वो accept करके उसको रजिस्टर कर देते हैं. तो इस तरीके से आपकी कॉपीराइट या जो भी आपकी IP प्रॉपर्टी है उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं. So it is a key challenge that this is a weak enforcement. People didn't know how to register your IP property. So and complicated legal process भी बहुत स्लो होता है. लोग इसलिए भी नहीं जाते अपना ट्रेड सीक्रेट या अपनी जो भी IP प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करवाने के लिए, because in India the enforcement system methods for obtaining and enforcing intellectual property rights are often slow and convoluted, which causes delay and disproportionate cost for individuals and organizations trying to protect the intellectual property. So key opportunities are also there. If we see competitive advantage are also there. Protection of intellectual property allows a startup to gain exclusive rights in their products or services, which in turn provides them with an edge over their competitors and blocks third parties from misappropriating their intellectual property. If you are having the intellectual property, then you can protect that by registration. So it also blocks the third parties for misappropriating their intellectual property. Moreover, several grant-funded startups also acquire third-party intellectual property portfolios to increase their competitive advantage or invest in research and development for generation of new intellectual property. Other is the intellectual protection against infringement. Adequately securing intellectual property protects a startup from inadvertently infringing a third party. Other is a strong brand identity. Brand identity should be there, and benefits of government initiatives.
The Government of India launched a scheme for facilitating startup intellectual property in 2016 to nurture innovative startups, investment in the startup ecosystem of the country. So in 2016 there is a startup intellectual property protection is there, in which we nurture the innovative startups and encourage investments in the startup ecosystem of the country. Next scheme provide access to intellectual property, services and resources to startups for the protection of the intellectual property through empaneled facilities. फर्दर स्टार्टअप एज वी ऑल नो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी हमारे कितने कहते हैं कि अपना अपना थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए, अपना काम खुद कीजिए. तो ये वही आपका स्टार्टअप का एक जरिया है. तो स्टार्टअप्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सिग्निफिकेंट एग्जम्पशंस इन गवर्नमेंट फीस व्हेन अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. द goal of initiatives like Atmanirbhar Bharat and Startup India is to create a climate that is conducive to innovation and intellectual property rights protection. So in last, there is a conclusion that is the benefits of strong intellectual property protection for outweigh the potential challenges startups must appreciate the value of their businesses and recognize the importance and necessity of intellectual property in nurturing the same, particularly of new barriers to intellectual property that have been brought about by the development. So, frequently asked question is, what is intellectual property in startups? Can anyone? Intellectual property? Intellectual property means creation of your mind and innovative expressions, including literature, art, design, symbols, names, images and computer codes. It is safeguarded by intellectual property law, which spans copyright, trademark and patent regulations, aiming to safeguard the rights of the creator. So what is an IP strategy for startups? This is another important frequently asked question. मैम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्या एमसीक्यू वाला जो जी सर, श्योर. लास्ट में उसको intellectual property safeguard in companies advice approach. So